Chabahar deal. Iran cancelled the deal, Chabahar seaport. Iran cancelled the deal with India and signed it with China. Its implications on Pakistan and the region as a whole क्या होंगे? In 2006, 2006 में India announced its Connect Central Asia policy. India ने announce कर दी अपनी Connect Central Asia policy. And the salient features of Connect Central Asia policy were: number one, number one नहीं लिखना, that is the development of Chabahar seaport. Number two, the development of Chabahar Zidan railway track. Chabahar Zidan railway track. तीसरा, Central Asia, Afghanistan, Iran, India gas pipeline. Central Asia, Afghanistan, Iran, India gas pipeline via Arabian Sea. उसके अलावा फिर the development of Zaranj-Dilaram road. The development of Zaranj-Dilaram road. This policy was retreated, reinforced, refreshed in 2016. A fresh MOU was signed between Tehran and New Delhi regarding Connect Central Asia policy. This deal got cancelled by Iran with India in 2020 and signed it with China. There are numerous reasons responsible for the change in the policies of Tehran, and that would have far-reaching implications on Pakistan and the region as a whole. ये मैंने purely introduction दिया आपको. इस टॉपिक का क्या है, एक हिस्ट्री है, वहां से मैंने स्टार्ट किया. कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ 2006, फिर कंटेम्पररी पे आ गया, फिर ईरान की पॉलिसी शिफ्ट पे आ गया. बॉडी में क्या आ रहा है, जो समरी आ रही है वो क्या है? ईरान पॉलिसी शिफ्ट. क्यों? Why cancelled the deal with India? Why the deal signed with China? Implications on Pakistan, implications in the region. 4 aspects हैं. मतलब क्या? इन 4 aspects के equal marks हैं. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को निकाल के फॉर एग्जांपल मैं 16 मार्क्स दे दूंगा, तो 16 मार्क्स का मतलब क्या? 4 मार्क्स ईच. अक्सर हमारा स्टूडेंट या जर्नल स्टूडेंट गलती क्या करता है? क्वेश्चन की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता. किसी एक पार्ट को बेतहाशा स्पेस दे देता है, किसी को बहुत कम स्पेस दे देता है. तो आप लोगों को यह पता हो कि इस क्वेश्चन के 4 एस्पेक्ट्स हैं और आपने इन चारों एस्पेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है. Now, why the deal cancelled with India? इंडिया के साथ ये डील क्यों कैंसिल हुई? नंबर 1, the increasing shift in the policies of New Delhi from Iran towards Middle East antagonized Tehran. Thesis statement मैंने एक पैराग्राफ का दिया. Increasing shift in the policies of India from Iran to Middle East antagonized Tehran. That resulted into the cancellation of the deal. कैसे? India has been the second largest importer. India has been the second largest importer of Iranian hydrocarbons. Iranian hydrocarbons का वो second largest importer रहा है in the world. Largest is China. But 2018 onward, 2018 onward, because of US pressure की वजह से India downsized its hydrocarbon imports, specifically oil and gas imports from Iran, and increased the imports from Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and Abu Dhabi.
यहाँ से मतलब मिडल ईस्ट से, जीसीसी से उन्होंने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए। और उसके पीछे रीजन क्या था? एक ट्रम्प्स प्रेशर, ट्रम्प का प्रेशर था। दूसरा मोदी पॉलिसी शिफ्ट था, मोदी का पॉलिसी शिफ्ट था कि मिडल ईस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईरान। तीसरा वैक्यूम हमने 2015 में क्रिएट किया इन द जीसीसी वर्ल्ड। सऊदी अरब ने हमसे ट्रूप्स मांगे, सऊदी अरब ने हमसे ट्रूप्स मांगे फॉर द वॉर इन यमन विच पाकिस्तान डिड नॉट प्रोवाइड। वैक्यूम हमने क्रिएट किया, उस वैक्यूम को इंडिया ने फिल कर दिया। ठीक, सो क्या हुआ? एक ट्रम्प का प्रेशर, दूसरा पॉलिसी शिफ्ट ऑफ मोदी, तीसरा पावर वैक्यूम क्रिएटेड बाय पाकिस्तान या डिप्लोमेटिक वैक्यूम क्रिएटेड बाय पाकिस्तान क्विकली फिल्ड बाय इंडिया। सो एक तो ये यू शिफ्ट आया, इसकी वजह से ईरान एंटागोनाइज्ड हुआ, ईरान के एक्सपोर्ट्स में सब्सटेंशियल ट्रेमेंडस डिक्लाइन आया। One. Second, and even more important reason was the slower process of investment made by or carried out by India in Chabahar seaport and other projects under Connect Central Asia policy. Process of investment slow raha from India. The total investment made by India in Chabahar seaport was around $300 million from 2016 till 2020. 2016 till 2020, only $300 million investment being made by India. उसके बाद Chabahar Zidan railway track remained restricted till MOU. वो क्या था? It was only on the paper. MOU was signed, memorandum of understanding was signed, but practical steps were not taken. मतलब क्या? India did not make any kind of financial investment in Chabahar Zidan railway track. Zidan नहीं किया उसने। तीसरा, same was the case with the gas pipeline. गैस पाइपलाइन के साथ भी वही इशू रहा कि इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट उसमें भी नहीं की। So the lack of interest of India in investing in its Connect Central Asia policy, whether Chabahar seaport, the railway track or the rest of the projects, made Iran realize or compelled Iran to rethink the agreement with India and cancel it with India and sign it with China. Force हुआ ईरान तेहरान। दो, थर्ड मेजर रीजन क्या बना? इंडिया has been using Chabahar seaport for intelligence purposes. If any country has more intelligence presence in Afghanistan after United States of America, that has been India. India has been using Afghanistan as a launching pad for terrorist attacks in Pakistan. Even it has been using Iranian territories for attacks in Pakistan. For example, 2019 में हमला हुआ कहाँ पे? That is PC गवादर में। और कोट कर रहा हूँ, कलभूषण जाधव, द रॉ एजेंट कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि रॉ हैज बीन यूजिंग चबहार सी पोर्ट फॉर इंटेलिजेंस पर्पसेस, फॉर मिलिट्री पर्पसेस, बट इन डिस्गाइज्ड फॉर्म। एंड ईरान न्यू अबाउट इट, ईरान को इसके बारे में पता चला, राइट? Because of which क्या हुआ? पाकिस्तान ईरान रिलेशंस फर्दर डिटेरियोरेटेड, ईरान पाकिस्तान रिलेशन मजीद खराब हुए। Therefore, Iran decided to stop India from using Chabahar seaport for its intelligence aims, designs against Pakistan and cancelled the deal with India. 3 arguments मैंने आपको दिए। इसी तरीके से why the deal was signed with China? डील चाइना के साथ क्यों साइन हुई? नंबर 1, चाइना इज द इकोनॉमिक लाइफ लाइन फॉर ईरान।
चाइना ईरान के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन है। कैसे? द लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर फ्रॉम ईरान हैज बीन चाइना। More than 26% of the overall imports, annual imports of China are from Iran each year. दूसरा, when Trump forced अच्छा, इससे भी पहले एक और argument, that is development. When Trump forced Europe, India, Japan and ASEAN countries, India, Japan and ASEAN countries to downsize their imports from Iran, energy imports from Iran. China decided to increase its energy imports from Iran. Lifeline की बात हो रही है, दो बातें मैंने कही। तीसरा, when multinational companies under the pressure of Trump pulled out from Iran, especially हाइड्रोकार्बन सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, चाइनीज कंपनीज डिसाइडेड टू फिल द गैप, द वैक्यूम। इकोनॉमिक लाइफलाइन बताने की मैंने कोशिश की। मजीद एक और बात भी ऐड कर सकते हैं। चाइना हैज साइंड MOUs amounting $480 billion with Iran. The investment would be made up till 2050. This huge magnanimous investment would be made by China in Iran until 2050. तो ईरान के लिए चाइना क्या है? इकोनॉमिक लाइफलाइन है। That was the reason to give the Chabahar seaport, the Chabahar Zidan railway track to China. Take it from India, give it to China. दूसरा रीजन क्या बना? That is, Iran wanted to be a part of the broader project of BRI. ईरान BRI का हिस्सा बनना चाहता था। As per the plan of China, of Beijing, Iran was the part of BRI, but in papers only. But on papers only, not in practice. क्यों? Because the Connect Central Asia policy of India was directly in antagonism with China's BRI project. जो इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी थी, वो डायरेक्ट एंटागोनिज्म में थी विद चाइना's BRI project. And Tehran realized that it would not be in a position to make substantial gains from India's Connect Central Asia policy, but it would speedily and easily become a transit corridor if it comes under the banner, under the flagship project of BRI. Resultantly, Tehran cancelled the deal with India, signed it with China. Mazid, implications of the deal क्या होंगे या क्या होंगे in the days to come? Implications on Pakistan, Part 1. Implications on Pakistan. The security concerns of Pakistan on the western and southern borders would substantially decline. The security concerns of Pakistan hai on the western border, that is with Afghanistan, the southern border, that is with Iran, वो substantially decline करेंगे। कैसे? Raw has been accessing Afghanistan through Iran. It has been responsible for supporting, बड़ा clearly कह रहा हूं, the separatist elements in Balochistan. गलती से भी बलोच separatist elements मत कहना। Separatist elements in Balochistan, separatist, terrorist, दोनों अल्फाज इस्तेमाल करने हैं in Balochistan, like Baloch Liberation Army, like यानी BLA, like Baloch Republican Army, BRA, like BLF, Baloch Liberation Front, etc. इनका मेजर सपोर्टर कौन रहा है? इंडिया। These organizations have been responsible for terrorist attacks across Balochistan and Karachi. Examples:
Balochistan में majority of the attacks being carried out by these organizations. For example, 2019 में हमला हुआ कहां पे? PC गवादर 2019. For example, Chinese workers being abducted from Quetta. For example, RPG attacks हुए in गवादर. उसके बाद फिर FWO workers were repeatedly targeted. उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइन, दैट इज सुई गैस पाइपलाइन, railway track, etc., all were targeted, repeatedly targeted by these separatist terrorist organizations. These organizations extended their attacks to Karachi also. Karachi में भी इसने हमले बढ़ा दिए. For example, the Chinese consulate in Karachi was attacked by BLA. और उसके बाद फिर द कराची स्टॉक, ये कब हुआ था? 18 में. कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ 2020 में, अगेन BLA ने किया. सो द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इन बलूचिस्तान हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक्स इन बलूचिस्तान एंड कराची. फर्दरमोर द जिहादिस्ट एंड सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स or general Taliban and sectarian terrorist outfits like ISKP, Islamic State of Khorasan Province, ISKP. दूसरा लश्कर-ए-जंगवी. तीसरा TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान. They have also been responsible for attacks across Pakistan, specifically Quetta and Karachi. And there is a long list of evidences, tangible data that gives the impression, stronger impression कि India is covertly supporting these terrorist organizations also to destabilize Pakistan. Objectives क्या है? Destabilization of Pakistan, sabotaging CPEC project. और इस सब के लिए इस्तेमाल होता रहा क्या? ईरान एज क्या कहते हैं, टेरिटोरियल एक्सेस. टेरिटोरियल एक्सेस के तौर पे इस्तेमाल होता रहा. कौन? ईरान. लेकिन सब कुछ डिस्गाइज्ड फॉर्म में था. फिर चबगार सी पोर्ट वाज यूज्ड एज अ बेस. अब चबगार सी पोर्ट टेकन फ्रॉम इंडिया गिवन टू चाइना, उसे क्या होंगे? इंडिया का रोल ईरान में, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में और कराची में जो उसका अटैक्स करता रहा है वो डिक्लाइन होगा. एक. दूसरा, गवादर चबगार राइवलरी वुड ऑल्सो डिक्लाइन. गवादर चबगार राइवलरी वुड ऑल्सो डिक्लाइन, वो भी डिक्लाइन करेगी. बोथ द सी पोर्ट्स हैव बीन नेचुरली राइवल्स, दोनों राइवल्स रहे हैं. And the rivalry was exacerbated, increased by the Indian factor. कैसे? एक्सप्लेन कर रहा हूं. दोनों सी पोर्ट्स कैसे राइवल्स हैं? द फ्यूचर ट्रेड फ्रॉम द लैंड लॉक्ड कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स टू द अरेबियन सी टू बी कंडक्टेड वाया चबगार और गवादर. That is the competition, or that has been the competition. सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उसके बाद रशिया एक्सेस करे अरेबियन सी को थ्रू गवादर और चबगार, ये कंपटीशन रहा है. एंड दिस कंपटीशन हैज बीन एग्जैसर्बेटेड बाय द इंडियन फैक्टर. वो इंडियन फैक्टर ने एग्जैसर्बेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंटागोनाइज कर दिया. कैसे? Accessing Central Asia and Afghanistan through Iran, bypassing Pakistan. Connect Central Asia policy theme line. Accessing Central Asia and Afghanistan through Iran, bypassing Pakistan. Now, as the seaport has been taken back from India and given to China, automatically the rivalry would decline. It would be further declined by China. Or China would take further initiatives to decline the rivalry between the two seaports. क्यों? Because China is investing in both the seaports and it cannot afford to make the two seaports or to become the two seaports as rivals. China ये afford नहीं कर सकता. So it would take initiatives. For example, for instance, क्या initiatives लेगा?
Special economic zones may be established on Pak-Iran borders. पाक-ईरान बॉर्डर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि बेनिफिट करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे ऑन द टू सी पोर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ठीक. नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस ऑन द रीजन. वन, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन, इंडिया would be out from Iran and China would make substantial entry into the country in future. इंडिया अफगानिस्तान से, ईरान से निकलेगा, अफगानिस्तान नहीं ईरान से, और चाइना सब्सटेंशियल एंट्री करेगा इनटू द कंट्री. कैसे? द प्रोसेस ऑफ डाउनसाइजिंग Indian's presence or Indian engagements with Iran have already been on decline. वो decline पे रहे हैं, as being told earlier. मजीद decline होंगे. Now, India does not have major economic or bigger economic engagements with Iran anymore. On the other hand, China is making $480 billion investment alone in Iran, the biggest investment in the region or any country in the region. इस रीजन में किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे कर रहा है? ईरान में. तो China is making a phenomenally strong entry into the country that would certainly block the way or the revival or the chances of revival of India's relations with Iran. It's a huge diplomatic setback, geostrategic, geopolitical setback to India and victory to China. Dusra, India's presence in Afghanistan would also decline. India's presence in Afghanistan would also decline. कैसे? The process of a declining role of India in Afghanistan began after US-Taliban Doha deal. US-Taliban Doha deal की वजह से इंडिया का रोल अफगानिस्तान में कम होना शुरू हुआ. कैसे? Pakistan became the key player in the negotiation process and India was kept out. Dusra, intra-Afghan dialogue, that is Afghan government, Afghan Taliban negotiations, उसमें दो बड़े players हैं, US and Pakistan. India is intentionally kept out here also. यहाँ पे भी बाहर है. और फिर Iran, Afghanistan's increasing relations with Pakistan, like the visits of Prime Minister of Pakistan to Afghanistan, the chief negotiator from Afghan government, Abdullah, with Taliban's visit to Pakistan, etc. यहाँ पे भी इंडिया बाहर होता जा रहा है, पाकिस्तान ज्यादा एंट्री कर रहा है. अब India also lost the access route to Afghanistan, territorial access route to Afghanistan that was made via Iran. वो खो चुका है. अब मजीद रोल उसका कम होगा. उसके बाद फिर रोल ऑफ पाकिस्तान वुड इंक्रीज इन अफगानिस्तान. पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में मजीद इंक्रीज होगा. कैसे? दोहा नेगोशिएशन में हमारा रोल आया, इंट्रा अफगान नेगोशिएशन में हमारा रोल आया. अब पाकिस्तान वुड ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर में हम ज्यादा रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे. और सबसे बड़ा कहां से हम स्टार्ट करेंगे? नेगोशिएशन के अलावा अफगान मिलिट्री ट्रेनिंग हम करेंगे. और देखिएगा इन द डेज टू कम हम ये ऑफर जरूर करेंगे उनको, और वो अफगान गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी. मार्क माई वर्ड्स. नेक्स्ट, उसके बाद चाइना का रोल वुड ऑल्सो इंक्रीज इन अफगानिस्तान. चाइना का रोल भी अफगानिस्तान में ज्यादा इंक्रीज होगा. चाइना हैज ऑलरेडी बीन प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द अफगान पीस प्रोसेस. कैसे? एक, क्वाड्रिलेटरल टॉक्स, क्वाड्रिलेटरल टॉक्स, 4 क्वाड्रिलेटरल टॉक्स, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें चाइना ने की रोल प्ले किया. उसके बाद
चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राइलेटरल टॉक्स, उसको भी लीड किया किसने? चाइना ने. Afghan government and Pakistan governments are increasingly brought closer by Beijing. Beijing उसमें रोल प्ले कर रहा है. तो अफगानिस्तान में चाइना का रोल, और फिर चाइना is becoming the largest investor in Afghanistan. So चाइना का रोल यहां पे बढ़ेगा. Implications on the region. और एक पॉइंट और, China has made a huge geopolitical leap of क्या कहता है, step forward. बहुत बड़ा geopolitical gain किया है. Geo economic, geo strategic combination, geopolitical. कैसे? Gwadar was already been given to China by Pakistan for development. Now Chabahar would also be developed by China. In future means क्या? China would increase its trade into the Arabian Sea via Pakistan and Iran. एक तो ये होगा. दूसरा, China may have more and more military presence in the Arabian Sea in the future through Gwadar and Chabahar. Done? ऐसे और कई सारे पॉइंट्स. So कंक्लूजन, पूरी कहानी पे दोबारा वापस क्या आएंगे? The cancellation of Chabahar deal with India and signing it with China is a diplomatic क्या कहते हैं, earthquake. Diplomatic earthquake आया है in the region, जिसमें इंडिया लूजर है, चाइना विनर है, और जिसका एक मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा? पाकिस्तान. And the chances of the regional integration would also increase. Chances of peace in the region would also increase. Chances of the integration of the regional countries कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये इंटीग्रेट होंगे. पीस के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रेड के चांसेस भी बढ़ेंगे. डन.